My fellow citizens, on the eve of the 66th Republic Day, I extend warm greetings to all of you in India and abroad. I convey my special greetings to members of our armed forces, paramilitary forces and internal security forces. 26th January holds an everlasting place in our national memory because it is the day when modern India was born. Under Mahatma Gandhi's moral and political leadership, the National Congress passed the Purn Swaraj resolution demanding complete independence from British rule in December 1929. Gandhiji organized nationwide celebrations on 26 January 1930 as Independence Day. From then on, the nation took a pledge on this day every year to carry on the freedom struggle till we attained it. Exactly 20 years later, in 1950, we adopted our Charter of Modernity, the Constitution. Tragically, Gandhiji had been martyred 2 years before. But the framework of a constitution that has made India a role model for today's world was constructed out of his philosophy. Its essence lay in 4 principles: democracy, freedom of faith, gender equality, and an economic upsurge for those trapped in the curse of dire poverty. These were made constitutional obligations. Gandhiji's talisman for the country's rulers was simple and powerful, and I quote, "Whenever you are in doubt, recall the face of the poorest and the weakest man whom you may have seen and ask yourself, will it lead to Swaraj for the hungry and spiritually starving millions?" Unquote. Our resolve to eliminate poverty through inclusive development has to be a step in that direction. Fellow citizens, the past year has been remarkable in many ways, particularly because after 3 decades the people have voted to power a single party with a majority for a stable government, and in the process freed the country's governance from the compulsions of coalition politics. Outcome of these elections has given the mandate to the elected government to fulfill its commitment to the people by using its majority for formulating policies and making laws to implement those policies. The voter has played her part. It is now up to those who have been elected to honor this trust. It was a vote for clean, efficient, effective, gender sensitive, transparent, accountable and citizen friendly governance. Fellow citizens, there can be no governance without a functioning legislature. The legislature reflects the will of the people. It is the platform where progressive legislation using civilized dialogue must create delivery mechanisms for realizing the aspirations of the people. It calls for reconciling the differences amongst stakeholders and building a consensus for the law to be enacted. Enacting laws without discussion impacts
the lawmaking role of the Parliament. It breaches the trust reposed in it by the people. This is neither good for democracy nor for the policies relating to those laws. Fellow citizens, Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Rabindranath Tagore, Subramania Bharati, and many more. The vocation and the approach might have been different, but they all spoke the same language of patriotism. We owe our freedom to these great warriors of nationalism. We also salute the unsung heroes who have died securing the liberation of Mother India. But it pains me to see that Mother India is not respected by her own children. When it comes to the safety of women, atrocities of rape, murders, harassment on the roads, kidnapping and dowry deaths have made women fearful even in their own homes. Rabindranath Tagore saw women not only as the deities of the household fire, but also the flame of the soul itself. Where have we failed? As parents, teachers, and leaders, that our children have forgotten all tenets of decent behavior and respect for women. We have enacted many legislations, but as Benjamin Franklin had once said, and I quote, "Justice will not be served until those who are unaffected are as outraged as those who are." Unquote. Every Indian must take a pledge to protect the honor of women from violence of any kind. Only a nation that respects and empowers its women can become a global power. Fellow citizens, the Indian Constitution is the holy book of democracy. It is a lodestar for the socio-economic transformation of an India whose civilization has celebrated pluralism, advocated tolerance, and promoted goodwill between diverse communities. These values, however, need to be preserved with utmost care and vigilance. The freedom inherent in democracy sometimes generates an unhappy byproduct when political discourse becomes a competition in hysteria that is abhorrent to our traditional ethos. The violence of the tongue cuts and wounds people's hearts. Religion, said Gandhiji, is a force for unity. We cannot make it a cause of conflict. Fellow citizens, much is said about India's soft power, but the most powerful example of India's soft power in an international environment where so many countries are sinking into the morass of theocratic violence lies in our definition of the relationship between faith and polity. We have always reposed our trust in faith equality, where every faith is equal before the law and every culture blends into another to create a positive dynamic. Wisdom of India teaches us unity is strength, dominance is weakness. Fellow citizens, the multi-nation conflict has converted boundaries into bloodlines and turned terrorism
into an industry of evil. Terrorism and violence are seeping across our borders, while peace, non-violence and good neighborly intentions should remain the fundamentals of our foreign policy. We cannot afford to be complacent about adversaries who will stop at nothing to disrupt our progress towards a prosperous and equitable India. We have the strength, confidence and determination to defeat architects of this war against our people. Repeated violations of the ceasefire along the line of control and terrorist attacks must get an integrated response through incisive diplomacy and impregnable security mechanisms. The world must join India in fighting the menace of terrorism. Fellow citizens, economic progress is also a test of democracy. Year 2015 is a year of hope. Key economic indicators provide for much optimism, strengthening of the external sector, move towards fiscal consolidation, moderation in price levels, early signs of rebound in manufacturing, and record agricultural production last year augur well for our economy. Achieving 5% plus growth rates each in the first two quarters of 2014-15 is a healthy sign for an early reversion to the high growth trajectory of 7 to 8%. The success of a society is measured by both survival and strengthening of its values, institutions and instruments of governance. Our national narrative has been shaped by the principles of its past, triumphs of today, and is now ready to own the future by powering its latent potential. Fellow citizens, our national ambition is to raise the quality of life of Indians by quantum leaps and raise generations enlightened by learning, patriotism, compassion, honesty and a sense of duty. Thomas Jefferson had said, and I quote, "Educate and inform the whole mass of the people. They are the only sure reliance for the preservation of our liberty." Unquote. We must strive for the highest quality in our educational institutions so that we can take our place within a visible future among the knowledge leaders of the 21st century. I would urge in particular that we lay special stress on the culture of books and reading, which takes knowledge beyond the classroom and frees imagination from stress of the immediate and the utilitarian. We must be a creative people, nourished by innumerable interlinked rivers of ideas. Our youth must lead the way to mastery of technology and communication in a universe where the cloud has become a library without frontiers and vast opportunity awaits within the computer in your palm. The 21st century is within India's grasp. Fellow citizens, this future will remain both visible and elusive if we do not discover the ability to continually cleanse ourselves of retrograde habits and social ills. Over the past century, some have died, others have faded, but many
still exist. We are celebrating this year the centenary of Gandhiji's return to India from South Africa. We can never cease to learn from a Mahatma. The first thing he did in 1915 was to keep his eyes open and his lips sealed. It is advisable to follow his example. While we are rightly focused on 1915, perhaps we should cast a glance on what Gandhiji did in 1901, the year when he returned home for his first break. The annual Congress session was held that year in Calcutta, then the capital of British India. Gandhiji was a delegate. He went to Ripon College for a meeting. He discovered that the whole place had been dirted by fellow delegates. A shocked Gandhiji did not wait for any allotted cleaner. He picked up a broom and cleaned the area. No one followed his example in 1901. 114 years later, let us follow his example and become worthy children of a magnificent father. Jai Hind. मेरे प्यारे देशवासियों, 66वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैं भारत और विदेशों में बसे आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं हमारी सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों तथा आंतरिक सुरक्षा बलों के सदस्यों को अपनी विशेष बधाई देता हूं। 26 जनवरी का दिन हमारे देश की स्मृति में एक चिरस्थायी स्थान रखता है, क्योंकि यही वह दिन है जब आधुनिक भारत का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी के नैतिक तथा राजनीतिक नेतृत्व के अधीन राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजी राज से पूरी स्वतंत्रता की मांग करते हुए दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया था। 26 जनवरी 1930 को गांधी जी ने पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में राष्ट्रव्यापी समारोहों का आयोजन किया था। उसी दिन से देश तब तक हर वर्ष इस दिन स्वतंत्रता संघर्ष को जारी रखने की शपथ लेता रहा जब तक हमने इसे प्राप्त नहीं कर लिया। ठीक 20 वर्ष बाद 1950 में हमने आधुनिकता के अपने घोषणा पत्र संविधान को अंगीकार किया। यह विडंबना थी कि गांधी जी 2 वर्ष पूर्व शहीद हो चुके थे, परंतु आधुनिक विश्व के सामने भारत को आदर्श बनाने वाले संविधान के ढांचे की रचना उनके ही दर्शन पर की गई थी। इसका सार 4 सिद्धांतों पर आधारित है: लोकतंत्र, धर्म की स्वतंत्रता, लैंगिक समानता तथा गरीबी के जाल में फंसे लोगों का आर्थिक उत्थान। इन्हें संवैधानिक दायित्व बना दिया गया था। देश के शासकों के लिए गांधी जी का मंत्र सरल और शक्तिशाली था। जब भी आप किसी शंका में हो, तब उस सबसे गरीब और सबसे निर्बल व्यक्ति का चेहरा याद करें जिसे आपने देखा हो, और फिर खुद से पूछें, क्या इससे भूखे और आध्यात्मिक क्षुधा से पीड़ित लाखों लोगों के लिए स्वराज आएगा?
समावेशी विकास के माध्यम से गरीबी मिटाने का हमारा संकल्प उस दिशा में एक कदम होना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछला वर्ष कई तरह से विशिष्ट रहा है, खासकर इसलिए कि 3 दशकों के बाद जनता ने स्थायी सरकार के लिए एक अकेले दल को बहुमत देते हुए सत्ता में लाने के लिए मतदान किया है और इस प्रक्रिया में देश के शासन को गठबंधन की राजनीति की मजबूरियों से मुक्त किया है। इन चुनावों के परिणामों ने चुनी हुई सरकार को नीतियों के निर्माण तथा इन नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कानून बनाकर जनता के प्रति अपनी वचनबद्धता को पूरा करने का जनादेश दिया है। मतदाता ने अपना कार्य पूरा कर दिया है। अब यह चुने हुए लोगों का दायित्व है कि वह इस भरोसे का सम्मान करें। यह मत एक स्वच्छ, कुशल, कारगर, लैंगिक संवेदना युक्त, पारदर्शी, जवाबदेह तथा नागरिक अनुकूल शासन के लिए था। प्यारे देशवासियों, एक सक्रिय विधायिका के बिना शासन संभव नहीं है। विधायिका जनता की इच्छा को प्रतिबिंबित करती है। यह ऐसा मंच है जहां शिष्टतापूर्ण संवाद का उपयोग करते हुए प्रगतिशील कानून के द्वारा जनता की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए सुपुर्दगी तंत्र की रचना की जानी चाहिए। इसके लिए भागीदारों के बीच मतभेदों को दूर करने तथा बनाए जाने वाले कानूनों पर आम सहमति लाने की जरूरत होती है। बिना चर्चा कानून बनाने से संसद की कानून निर्माण की भूमिका को धक्का पहुंचता है। इससे जनता द्वारा व्यक्त विश्वास टूटता है। यह ना तो लोकतंत्र के लिए अच्छा है और न ही इन कानूनों से संबंधित नीतियों के लिए अच्छा है। प्यारे देशवासियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारती और अन्य बहुत से लोगों के व्यवसाय तथा नजरिए भले ही अलग अलग रहे हों, परंतु उन सभी ने केवल राष्ट्रभक्ति की ही भाषा बोली। हम अपनी आजादी के लिए राष्ट्रीयता के इन महान योद्धाओं के ऋणी हैं। हम उन भूले बिसरे वीरों को भी नमन करते हैं जिन्होंने भारत माता की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। परंतु मुझे यह देखकर दुख होता है कि जब महिलाओं की हिफाजत की बात होती है तब उसके अपने बच्चों द्वारा ही भारत माता का सम्मान नहीं किया जाता। बलात्कार, हत्या, सड़कों पर छेड़छाड़, अपहरण तथा दहेज हत्याओं जैसे अत्याचारों ने महिलाओं के मन में अपने घरों में भी भय पैदा कर दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर महिलाओं को न केवल घर में प्रकाश करने वाली देवियां मानते थे, वरन उन्हें स्वयं आत्मा का प्रकाश मानते थे। माता पिता, शिक्षकों और नेताओं के रूप में हमसे कहां चूक हो गई है कि हमारे बच्चे सभ्य व्यवहार तथा महिलाओं के प्रति सम्मान के सिद्धांतों को भूल गए हैं। हमने बहुत से कानून बनाए हैं, परंतु जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था, न्याय का उद्देश्य तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक कि वे लोग भी उतने ही शुभ नहीं महसूस करते जो भुक्तभोगी नहीं हैं जितना कि वे जो भुक्तभोगी हैं। हर एक भारतीय को किसी भी प्रकार की हिंसा से महिलाओं की हिफाजत करने की शपथ लेनी चाहिए। केवल ऐसा ही देश वैश्विक शक्ति बन सकता है जो अपनी महिलाओं का सम्मान करे तथा उन्हें सशक्त बनाए। प्यारे देशवासियों, भारतीय संविधान लोकतंत्र की पवित्र पुस्तक है। यह ऐसे भारत के सामाजिक आर्थिक बदलाव का पथ प्रदर्शक है जिसने प्राचीन काल से ही बहुलता का सम्मान किया है, सहनशीलता का पक्ष लिया है तथा विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव को बढ़ावा दिया है। परंतु इन मूल्यों की हिफाजत अत्यधिक सावधानी और मुस्तैदी से करने की जरूरत है। लोकतंत्र में निहित स्वतंत्रता कभी कभी उन्मादपूर्ण प्रतिस्पर्धा के रूप में एक ऐसा नया कष्टप्रद परिणाम सामने ले आती है जो हमारी परंपरागत प्रकृति के विरुद्ध है। वाणी की हिंसा चोट पहुंचाती है और लोगों के दिलों को घायल करती है। गांधी जी ने कहा था कि धर्म एकता की ताकत है।
हम इसे टकराव का कारण नहीं बना सकते। प्यारे देशवासियों, भारत की सौम्य शक्ति के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, परंतु इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में जहां बहुत से देश धर्म आधारित हिंसा के दलदल में फंसते जा रहे हैं, भारत की सौम्य शक्ति का सबसे शक्तिशाली उदाहरण धर्म एवं राज व्यवस्था के बीच संबंधों की हमारी परिभाषा में निहित है। हमने सदैव धार्मिक समानता पर अपना भरोसा जताया है, जहां हर धर्म कानून के सामने बराबर है तथा प्रत्येक संस्कृति दूसरे में मिलकर एक सकारात्मक गतिशीलता की रचना करती है। भारत की प्रज्ञा हमें सिखाती है, एकता ताकत है, प्रभुता कमजोरी है। प्यारे देशवासियों, विभिन्न देशों के बीच टकराव ने सीमाओं को खूनी हदों में बदल दिया है तथा आतंकवाद को बुराई का उद्योग बना दिया है। आतंकवाद तथा हिंसा हमारी सीमाओं से घुसपैठ कर रहे हैं। यद्यपि शांति, अहिंसा तथा अच्छे पड़ोसी की भावना हमारी विदेश नीति के बुनियादी तत्व होने चाहिए, परंतु हम ऐसे शत्रुओं की ओर से गाफिल रहने का जोखिम नहीं उठा सकते जो समृद्ध और समतापूर्ण भारत की ओर हमारी प्रगति में बाधा पहुंचाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। हमारे पास अपनी जनता के विरुद्ध लड़ाई के सूत्रधारों को हराने के लिए ताकत, विश्वास तथा दृढ़ निश्चय मौजूद है। सीमा रेखा पर युद्ध विराम का बार बार उल्लंघन तथा आतंकवादी आक्रमणों का कारगर कूटनीति तथा अभेद्य सुरक्षा प्रणाली के माध्यम से समेकित जवाब दिया जाना चाहिए। विश्व को आतंकवाद के इस अभिशाप से लड़ने में भारत का साथ देना चाहिए। प्यारे देशवासियों, आर्थिक प्रगति लोकतंत्र की परीक्षा भी है। वर्ष 2015 उम्मीदों का वर्ष है। आर्थिक संकेतक बहुत आशाजनक है। बाहरी सेक्टर की मजबूती, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की दिशा में प्रगति, कीमतों के स्तर में कमी, विनिर्माण क्षेत्र में वापसी के शुरुआती संकेत तथा पिछले वर्ष कृषि उत्पादन में कीर्तिमान हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत हैं। 2014-15 की पहली दोनों तिमाहियों में 5% से अधिक की विकास दर की प्राप्ति, 7 से 8% की उच्च विकास दर की दिशा में शुरुआती बदलाव के स्वस्थ संकेत हैं। किसी भी समाज की सफलता को इसके मूल्यों, संस्थाओं तथा शासन के उपादानों के बने रहने तथा उनके मजबूत होने दोनों से मापा जाता है। हमारी राष्ट्रीय गाथा को इसके अतीत के सिद्धांतों और आधुनिक उपलब्धियों से आकार मिला है तथा यह आज अपनी प्रच्छन्न शक्ति को जागृत कर भविष्य को अपना बनाने के लिए तत्पर है। प्यारे देशवासियों, हमारी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा भारतीय जनता के जीवन स्तर को तेजी से ऊंचा उठाना तथा ज्ञान, देशभक्ति, करुणा, ईमानदारी तथा कर्तव्य बोध से संपन्न पीढ़ियों को तैयार करना है। थॉमस जेफरसन ने कहा था, सारी जनता को शिक्षित तथा सूचना संपन्न बनाएं। केवल वे ही हमारी आजादी की रक्षा के लिए हमारा पक्का भरोसा हैं। हमें अपनी शैक्षिक संस्थाओं में सर्वोच्च गुणवत्ता के लिए प्रयास करने चाहिए ताकि हम निकट भविष्य में 21वीं सदी के ज्ञान क्षेत्र के अग्रणियों में अपना स्थान बना सकें। मैं विशेषकर यह आग्रह करना चाहूंगा कि हम पुस्तकों और पढ़ने की संस्कृति पर विशेष जोर दें, जो ज्ञान को कक्षाओं से आगे ले जाती है तथा कल्पनाशीलता को तात्कालिकता और उपयोगितावाद के दबाव से आजाद करती है। हमें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई असंख्य विचारधाराओं से संपन्न सृजनात्मक देश बनना चाहिए। हमारे युवाओं को ऐसे ब्रह्मांड का प्रौद्योगिकी तथा संचार में पारंगतता की दिशा में नेतृत्व करना चाहिए, जहां आकाश सीमा रहित पुस्तकालय बन चुका है तथा आपकी हथेली में मौजूद कंप्यूटर में महत्वपूर्ण अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 21वीं सदी भारत की मुट्ठी में है। प्यारे देशवासियों,
यदि हम हानिकारक आदतों और सामाजिक बुराइयों से खुद को निरंतर स्वच्छ करने की अपनी योग्यता का उपयोग नहीं करते, तो भविष्य हमारे सामने मौजूद होते हुए भी हमारी पकड़ से दूर होगा। पिछली सदी के दौरान इनमें से बहुत सी समाप्त हो चुकी हैं, कुछ निष्प्रभावी हो चुकी हैं, परंतु बहुत सी अभी मौजूद हैं। हम इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी की वापसी की सदी मना रहे हैं। हम कभी भी महात्मा जी से सीख लेना नहीं छोड़ेंगे। 1915 में उन्होंने जो सबसे पहला कार्य किया था वह था अपनी आंखें खुली रखना तथा अपना मुंह बंद रखना। इस उदाहरण को अपनाना अच्छा होगा। जबकि हम 1915 की बात कर रहे हैं, जो कि उचित ही है, तब हमें संभवतः 1901 में, जिस वर्ष वह अपनी पहली छुट्टी में घर लौटे थे, गांधी जी ने जो कार्य किया था उस पर एक नजर डालनी चाहिए। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन उस वर्ष कलकत्ता में आयोजित हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत की राजधानी था। वह एक बैठक के लिए रिपॉन कॉलेज गए थे। उन्होंने देखा कि बैठक में भाग लेने वाले लोगों ने सारे स्थान को गंदा कर दिया है। यह देखकर स्तब्ध होते गांधी जी ने सफाई कर्मी के आने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने झाड़ू उठाई तथा उस स्थान की सफाई कर डाली। 1901 में उनके उदाहरण का किसी ने अनुकरण नहीं किया था। आइए 114 वर्ष बाद हम उनके उदाहरण का अनुकरण करें तथा एक महान पिता के सुयोग्य बच्चे बने। जय हिंद।